Let's start discussing questions related to grammar portion. Our today's grammatical topic for this lesson is voices, active and passive voice. So first we'll be discussing rules for changing active voices into passive ones. And there are different rules for different tenses. First we'll be discussing rules for past tense. Let's start talking about simple past, past indefinite tense. And let's talk about a simple sentence. I ate an apple. अब यहाँ पे I जो है वो हमारे पास subject है क्योंकि doer of action है. Ate हमारे पास verb है which is action and apple हमारे पास object है क्योंकि ये receiver of action है, इस पे action perform किया जा रहा है. और ये हमारे पास है active voice. जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और फिर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए जाएंगे जो कि अग्री करने चाहिए जो हमारा सब्जेक्ट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल एन एप्पल. अब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा was and in passive voices we have to use always have to use third form of verb which is past participle form of verb. कोई और फॉर्म नहीं लगती है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है, be it past tense, be it present tense या future tense. जो चेंजेस आती हैं वो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जा रहे होते हैं उनमें चेंजेस आती हैं which are according to the tense and according to the subject. An apple was eaten, eat की थर्ड फॉर्म, by me. अब ये जो I था जो हमारा सब्जेक्ट था it has been changed into me which is the objective case of I. तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया and apple जो हमारे पास एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया. एट के हमने थर्ड फॉर्म लगाए एंड वन मोर थिंग विच इज़ नेसेसरी इन पैसिव वॉइस, आपने हमेशा बाय का यूज़ करना है, हर टेंस में आपने बाय का यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब वॉज यहाँ पे क्यों आया? बिकॉज इट वॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस विच इज़ सिंपल पास्ट टेंस. तो वॉज हमने सिंगुलर था हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ एग्रीमेंट करके वॉज लगाया. लेट्स टॉक अबाउट पास्ट continuous tense. Again, I'll be taking the same sentence and changing it into continuous one. I was eating an apple. This is our active voice. Let's change it into passive. Same rule. This is our subject which will be turned into object. This is our object which will be turned into subject. And we have verb eating. And then we have helping verb was because continuous tenses में helping verb is am, are, was, were आते हैं. So पहले तो हमारा जो object है वो यहाँ पे subject बन जाएगा an apple. And again it is singular. was आएगा क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. अब जब हमारे पास ing फॉर्म वाले वर्ब्स आएंगे उसके लिए आपने हमेशा being यूज़ करना होता है. अगर यहाँ पे पास्ट की बात आ रही है तो आप यहाँ पे was या were being यूज़ करेंगे और अगर प्रेजेंट की बात आ रही है तो वो हम आगे चल के देखते हैं उनके साथ क्या यूज़ किया जाएगा. An apple was being. Again, we'll always use third form of verb which is eaten. Again, we'll always use by me. So ये I फिर से me में change हो गया which is object now. ये हमारे पास passive voice आ गई. तो आपने क्या करना है, आपने continuous tense में was being या were being का use करना होता है. And again, third form of verb and you will use by with it. Now, past perfect tense. I had eaten an apple. You know that have, has, had के साथ हमेशा third form of verb use होता है. An apple, ये हमारा जो object था वो subject बना, had आ जाएगा और आपने been लगाना है. Had been eaten by
me। तो ये जो been होगा वो ऑलरेडी जो आपके पास फॉर्मेट आ रहा है कि had के साथ आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होता है। सो अब आपको स्पेशली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग थर्ड फॉर्म विद had अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द टेंसेस। अब ये जो been है ये eaten और had के बीच में सैंडविच होगा, हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा had been eaten by me। सो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या चेंज है कि आपने बीन का यूज़ करना है। कंटिन्यूस टेंस में क्या चेंज है, वॉज वर बीइंग का यूज़ करना है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यू हैव टू यूज़ वॉज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप वॉज यूज़ करोगे, इफ़ इट्स प्लूरल तो आप वर यूज़ करोगे। सो दिस वॉज द डिस्कशन फॉर पास्ट टेंस। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस which is quite similar to it. If you have grasped this concept तो वो भी जल्दी समझ आ जाएगा। Let's talk about simple present या present indefinite tense first. We'll again take the same example. I eat an apple. Okay, so an apple। अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे वॉज वर नहीं लगाएंगे। विल बी यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स इज़ या आर या एम। तो एन एप्पल सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इज़ लगाएंगे। एन एप्पल इज़ ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव। बाय का यूज़ होगा हमेशा। सो यू सी इज़ आया, हमने इसको सब्जेक्ट से एग्रीमेंट कराया क्योंकि सिंगुलर था। ईटन हम हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, बाय यूज़ करेंगे हमेशा। एंड जो हमारा आई था सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव केस वी हैव मी ओवर हेयर। सो दिस इज़ एक्टिव, दिस इज़ पैसिव। देन द सेकेंड वन इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम ले लेते हैं आई एम ईटिंग एन apple। An apple, same rule apply होगा, just the shift is in the helping verbs which is according to the tense। An apple is being eaten by me। तो हमने is लगाया क्योंकि we are talking about present continuous tense। और जहाँ पे ing वाले verbs आएंगे as we discussed earlier कि उसके साथ हम हमेशा being use करेंगे। and again third form of verb and by। so ये हमारा हो गया passive for present continuous tense। अब बात करते हैं present perfect tense की। इसमें हम अगेन सेम एग्जांपल लेंगे। I have eaten an apple। an apple पहले आ जाएगा। सेम रूल होगा जो हमने पास्ट परफेक्ट में डिस्कस किया था। an apple have के बाद been eaten by me। इसमें भी आप जो been है उसको have और थर्ड फॉर्म के बीच में लगाओगे। ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया। Let's talk about future tense now। future tense में let's talk about simple future tense या future indefinite tense। I will eat an apple। तो ये अब हमारे पास शिफ्ट आ रही है इस will में। हम will helping verb यूज़ करते हैं या shall यूज़ करते हैं future को शो करने के लिए। अब ये आ जाएगा an apple will। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो will ही आएगा। an apple will, इसके बाद be आएगा। and then again we'll be using third form of the verb eaten। again we'll be using by and then objective case of I which is me। so आपको चेंज करने के लिए सिर्फ will की जगह will be लगाना है। ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया। and then let's talk about future continuous tense। I will be eating an apple। तो future continuous tense में हम अब कैसे इसको चेंज करेंगे। an apple will be वैसे ही आ जाएगा। अब as I explained earlier जहाँ पे भी ing आएगा आप वहाँ पे being ज़रूर यूज़ करेंगे। an apple will be being eaten
by me, वही रूल कि आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। तो चेंज क्या आएगा, आपने एन एप्पल के साथ जैसे कि एक्टिव में विल बी यूज़ हुआ है, यू विल यूज़ विल बी, बीइंग आप यूज़ करोगे बिकॉज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रहा है, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ ईटन, एंड अगेन यू विल यूज़ बाय, एंड देन objective case of the subject I का हो जाएगा me. So this is your passive voice for future continuous tense. Then we'll be discussing future perfect tense. I will have eaten an apple, though it is not possible to talk like this. Just for the clarification of rules, मैं आपको बता रही हूँ कि इसको कैसे change करेंगे. An apple will have, जैसे कि बताया था कि has, have, had के साथ आप हमेशा been यूज़ करते हो, and already इसके साथ जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है, तो वो वैसे ही आ जाएगा by me. An apple will have been eaten by me. So ये active voice हो गया आपका, ये passive हो गया. So these are the rules for changing active voices into passive ones for different tenses. So let's move on to the questions related to our grammatical topic. Our first question is make passive voice. So first one is in the street letters. हम लोगों को verbs जो हैं brackets में दिए गए हैं, हम उनको passive के तौर पे use करेंगे in blanks में. So in the street letters, dash by the postman at every day, और हम लोग को कौन से verb को यूज़ करना है, कौन से tense को यूज़ करना है, वो जो hint है हमें ऐसे वर्ड से मिलेगा. एवरी डे हो गया, yesterday हो गया, तो हम लोग को पता चलेगा कौन से टेंस की बात हो रही है. एंड द स्ट्रीट लेटर्स आर डिलीवर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा क्योंकि एक हैबिट की या रोज़ के काम होने की बात हो रही है. सेकेंड इज दिस बैग डैश ऑन द बस yesterday नाइट. दिस बैग was found क्योंकि yesterday की बात हो रही है. थर्ड इज आई एम अफ्रेड द ड्रेस डैश इन हॉट वाटर. द ड्रेस cannot be washed in hot water. Fourth is dash your motorbike dash yet. I would like to borrow it tomorrow. Has your motorbike been repaired yet? Yet से हमें हिंट मिला कि हम लोग has, have, had वाले tenses यानी perfect tense की तरफ जाएंगे. Fifth is the message dash tomorrow I promise. The message will be sent tomorrow I promise. Sixth is these offices dash now be careful the floors are wet. These offices are being cleaned now. Be careful the floors are wet. Seventh is this report dash in time if you didn't help me. Thank you very much. और हमारे पास है not finished. तो जहाँ पे भी if आएगा वो हमारे पास type of conditional sentence आ जाएगी. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे this report would not be finished in time. 8 is why dash the TV dash everyone has gone to bed. Why is the TV turned on? 9th is this building needs renovating. It dash since the 1960s. So अब यहाँ पे since आ रहा है, हमें पता है since या for आए तो हम present perfect continuous की बात कर रहे होते हैं. So this building needs renovating. It has not been constructed since the 1960s. 10th is, madam, you cannot take your bag into the gallery. All the bags must be left in the cloakroom. 11th is, the engine dash just dashed when the manager saw it and he was satisfied with it. The engine was just being tested. 12th is, I'm sorry sir, the last umbrellas dash in the morning. The last umbrellas were sold in the morning. 13th is, where have you been so long? You dash to arrive so late if you worked for me. अब फिर से if आ रहा है तो it will be a type of conditional sentence. You would not be allowed to arrive so late. 14th is, please be patient. The plan dash in 2 days. The plan will be announced in 2 days. 15th is, all the halls dash at the moment. It will take us 2-3 days.
All the holes are being painted at the moment. 16th is, what were we doing at 11 o'clock? We dash by a reporter. We were being interviewed by a reporter. 17th is, after the window pane dash, someone smashed the window again, and we have replaced. After the window pane had been replaced, someone smashed the window again. Let's move on to next question, which is complete the conversation with questions in the passive voice. So हमें conversation दी गई है, it's kind of a dialogue, and we have given hints and verbs in brackets. उसको देख के we'll construct a interrogative sentence. There was a storm on the coast last night. अब B जो है वो question पूछ रहा है, and we have anything and damage. So ये past form में बात चल रही है, तो ये हो जाएगा was anything damaged, because passive है तो हम third form use करेंगे. Yes, some trees fell on cars. Fortunately, nobody was killed. B बोलता है how many cars dashed during the storm? How many cars were crushed during the storm? 3 or 4? B कहता है, question पूछता है, the trees removed yet? Have the trees been removed yet? Yes, they have, but the cars are still there. 4th is, when dash, again a question, we have word the car and verb remove, and answer आता है tomorrow I hope so. Future की बात की जा रही है. When will the cars be removed? B, again question, the car is badly damaged. A answer करता है, yes they are, one of them is completely destroyed. Are the cars badly damaged? Then B again asks question, and we have word the removal and verb start. इसके आंसर में A कहता है, yes it has. When I was there in the morning, one of the cars was just being put in a lorry. Has the removal of the cars been started yet? 7th is, B, you look quite depressed. Was it your car which was completely destroyed? A कहता है, no it wasn't, but Derek, where dash last night? Where was your car parked last night? Are you joking? My car had been parked in my garage long before the storm started. So we have completed the dialogue. Let's move on to next exercise. Make passive voices. First is, I think they make these cars in Japan. I think these cars are made in Japan by them. Moving on to second sentence, which is, you must not drop litter in the street in Singapore. In the street in Singapore हमें दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा litter must not be dropped in the street in Singapore. Someone smashed our window last night. Our window was smashed by someone last night. 4th is, they have already mended the TV set. You can collect it. The TV set has already been mended by them. You can collect it. 5th is, people will need more public transport in the near future. More public transport will be needed by people in the near future. 6th is, don't enter the room. They are decorating the walls. Don't enter the room. The walls are being decorated by them. 7th is, you should not replace the roof at the beginning of winter. The roof should not be replaced. अब आपने by you लगाना है, it's fine, नहीं लगाना तब भी सेंस बन रही है. Should not be replaced
by you. If we solely follow the rules, तो by you लगा दें at the beginning of winter. 8th is people are spending less money on cars this year. Less money is being spent by people on cars this year. 9th is they have cooked the meal before 10 o'clock. The meal has been cooked by them before 10 o'clock. 10th is someone was building the wall when I was there. The wall was being built by someone when I was there. हम लोग being क्यों लगा रहे हैं? Because again we are having this ing form of verb over here, तो उनके साथ being लगता है हमेशा. 11th is no problem, they sell this food in every shop. No problem, this food is sold by them in every shop. 12th is they delivered more parcels last year because people bought more goods in e-shops. More parcels were delivered by them last year because people bought more goods in e-shop. 13th is they have not replaced the wheels yet, but they will let you know as soon as possible. The wheels have not been replaced by them yet. हम have क्यों लगा रहे हैं? एक तो हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और have जो होता है वो प्लूरल के साथ लगता है अगर we are talking about present perfect tense, और जो has होता है वो present perfect tense में singular subject के साथ लगता है. So we are done with our grammar portion. So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. Inshallah we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care. This is Maha, your English instructor, signing out.